Hello beta, good morning. Today we will see our fifth technique of separation of solid and liquid, that is chromatography. Okay, already we have seen four techniques of separating of solid and liquid. Okay, so we will start now chromatography. There are different types of chromatography, but in 9th standard only we will see paper chromatography. Okay, so now we will start the process of chromatography. Chromatography technique is used to separate two or more solids are dissolved in liquid. Just note it down. When two or more solids are dissolved in liquid, that time chromatography technique is used. So we will see that the now we will see that the process of chromatography, or you can say that paper chromatography. First, take a filter paper, and after that by using pencil just draw a line. Listen properly. First take a filter paper, by using pencil draw a line. After that first what we will separate by this method, we will separate dye. Okay, start again. We will separate dye from black ink. Dye means mixture of different colors. Mixture of different colors are known as dye. So when we are talking about black ink, it means that in black ink there are different types of colors are present. So how can we separate different types of color? Let's start. First, take a filter paper, by using pencil mark here, and now black, just drop only one drop of ब्लैक इंक ऑन ए लाइन. जो आपने लाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर एक ड्रॉप ब्लैक इंक आप ड्रॉ कर, उसके ऊपर डालो आप. सो जैसे हम एक ड्रॉप डालेंगे उसको थोड़ी देर के लिए लीव करो. कब तक? जब तक वो ड्राई ना हो जाए पेपर. सो आफ्टर फ्यू मिनट्स वी विल सी दैट कि पेपर आपका ड्राई हो जाएगा और ब्लैक इंक का ऐसे ही मार्क हो जाएगा. देन व्हाट वी विल डू, टेक अ बीकर. In beaker, take some water and put your filter paper in water, but just make sure that mark should be outside water. Whatever marks we have made by using pencil, हमने पेंसिल से जो मार्क बनाया था वो आपका ऊपर होना चाहिए, वो पानी के अंदर नहीं होना चाहिए. सो जब फिल्टर पेपर डालोगे तो क्या होगा, स्लोली पानी जो है पेपर ऑब्जॉर्ब करेगा, पानी सोखने लगेगा वो, तो स्लोली पानी का जो लेवल है वो ऊपर जाने लगेगा. इंक आप पहले से ही नहीं उसके अंदर सिंक करोगे, वो ऊपर रहेगा, बट पेपर का थोड़ा सा पार्ट वाटर के अंदर है, तो जैसे पानी सोख करेगा स्लोली पूरा पेपर आपका वेट होने लगेगा. आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, वी विल सी इन next figure. We will see that some patches
will form like that. When whole paper, आपका पूरा पेपर जब वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंट टाइप के पैचेस आ जाएंगे. These patches will indicates that suppose 3 patches are there, it means that 3 color of dye are present in black ink. But one more thing, note it down. जैसे आपका वाटर का लेवल यहां तक पहुंचेगा, फर्स्ट ये इंक जो है वो जैसे जैसे आपका पेपर वेट होता जाएगा, ये यहां से इंक भी उस पानी के अंदर डिसॉल्व होगा और स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा. ओके बेटा. एंड जो इंक आपका सबसे ऊपर फॉर्म होगा वो सबसे ज्यादा वाटर में डिसॉल्व होगा. जो मिक्सचर सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगा वो सबसे ज्यादा ऊपर तक जाएगा, और जो उससे लेस होगा वो मीडियम रहेगा, जो सबसे लीस्ट होगा वो लेट डिसॉल्व होगा. ओके. विच वन इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, दैट विल रीच एट मोस्ट हाइट, and which one is least soluble, it's mean that it will take some time to dissolve in water. So इसका जो लेवल होगा वो नीचे रहेगा. आफ्टर दैट जब आपका पूरा पेपर वेट हो जाए, तो गीला हो जाए, तो उसके बाद क्या करो, जस्ट रिमूव द पेपर. ओके बेटा. सो जस्ट रिमूव द पेपर एंड उसको ऐसे लीव कर दो ड्राई होने के लिए. तो जब आपका ड्राई हो जाएगा तो आपको उस पर डिफरेंट पैचेस दिखेंगे. सो दीज पैचेस indicates that suppose 3 patches are there, it means that it indicates that three different colors are mixed in a black ink. I am repeating again. If you want to separate the different colors from the black ink, first take a filter paper, mark one line with the pencil, then put one drop of ink on a line, and after that in a beaker take water, immerse your filter paper, but that line should be above the water level. Slowly water will be, filter paper will absorb the water and whole paper will be wet. But in which if 2 or 3 different types of colors are present, the one color which is most dissolved in water or most soluble in water will cover the most distance और सबसे ऊपर जाके पैचेस फॉर्म करेगा. जो लेस होगा उसके नीचे जो लीस्ट डिसॉल्व होगा, जो लीस्ट डिसॉल्व होगा वो टाइम ज्यादा लेगा और वो नीचे पैचेस फॉर्म करेगा. ओके. सो आफ्टर दैट जस्ट रिमूव द फिल्टर पेपर. Okay beta, after some time just remove the filter paper when whole paper is wet, and then just leave it for some time. So after that जब ये dry हो जाएगा, so you will see that the black ink which has 3 different color on a filter paper, it's mean that in a black ink that dye is present which has 3 colors. Okay beta, dye is a mixture of colors which is present in black ink. In black ink, if 3 patches are there, it means that 3 colors. Okay. Now last we will see the distillation. What is distillation? Distillation is nothing but just a evaporation process. Suppose we have taken in evaporation process what? Salt and water. Suppose you have taken salt and water, so when you will evaporate, when you will heat the water, water will evaporate and you will get your salt. So it is separated. But you don't want to waste your water. आपको separate होने के बाद water भी चाहिए, salt भी चाहिए. Then what we will do? We will start heating the mixture of water and salt. ओके. सो हियर आप सेटअप कर देंगे कि जब आप हीट करोगे वाटर इवेपोरेट होगा, फिर इधर कूलिंग इफेक्ट लगा के फिर उस वाटर को हम यहाँ पे कंडेंस करके दूसरे बीकर में स्टोर कर लेंगे. ओके. सो डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड वेयर सॉल्ट और शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर एंड वी वांट टू सेपरेट बोथ सॉल्ट and water separately. Don't want to waste your water. That time you will not use evaporation process, you will use distillation process. In distillation process, first
heat the solution. When your water start evaporating, just cool that water, you will get water and salt separately. Okay beta, in next video we will see that how two liquids are separated. Okay, बिफोर दैट जितने भी पार्ट्स हुआ है उसको आप अच्छे से देखो, अच्छे से प्रिपेयर करो.